फर्स्ट टाइम पोर्ट्रे बना हेची पर्सन रा माने दिस इज द मोनालिसा पेंटिंग एथरे एमती कोन अछि कि इट बिकम्स सो फेमस एथरे एमती कोन अछि फर्स्ट टाइम पेंटिंग बनाई थियो माने कोन माने रियलिस्टिक गोटे जिंसटा आगु जो जिंसटा हे पनथे एते डिटेलिंग रे एथरे कोन बते ए जो पेंटिंग का आगे अछि एथरे कोन डिटेल अछि बा हम स्कूल छुआ माने जो माने पेंटिंग एने सिखुचंती दे कैन मेक बेटर पिक्चर देन दिस बट जो टाइम रे एटा बना हेची मे बी सेही टाइम पे एटा बहुत बड़ या ना एटा बहुत सारा चोरी हेइला होती सेही पई फेमस हे कोला सर पेंटिंग ऊपर बहुत थर माने थेफ्ट अटेम्प्ट हेइची तो सेति पई अरे थेफ्ट वेफ्ट नो इट इज नॉट अबाउट थेफ्ट अटेम्प्ट इट इज सर अबाउट से जो फोटो देखिले तक अलग अलग इमोशन देखा जाउ थाए बोली गोटे रे पढिथिली अबे सर सब सुन या आगु जस्ट या आगु कोन होतला या आगु चर्च ऑफ दबदबा थिला तेणु करी पेंटिंग जदि भी अलाउड थिला इस्लाम रे तो अलाउड भी नहीं क्रिश्चियनिटी रे पेंटिंग जदि भी अलाउड थिला ताहले इट हैज टू बी बाइबल बेस्ड और जीसस बेस्ड जहां भी पेंटिंग हबो यार भीतर ही रहिबो तले प्रोटेस्टेंट माने प्रोटेस्ट करले बहुत वर्ष पारे माने प्रथम थर पे गोटे ह्यूमन पेंटिंग हला जे कि बाइबल बाहरे जीसस लाइफ बाहरे किबा आगु सब जीसस लाइफ रो स्टोरी बेसिस रे पेंटिंग होतला so it became a kind of a revolution thus Mona Lisa become a face of that new painting style hence Mona Lisa become a face of that new painting style ता माने नो कि सेटा बहुत भलो पेंटिंग थिला किंतु ताठु भी आहुरी भलो भलो पेंटिंग थाए बट इट वाज बाइबल बेस्ड और लाइफ हिस्ट्री ऑफ जीसस बेस्ड तेणु करी हम एते कथा के जानछु बानी थानी often referred as Mona Lisa of India ना कहीं की ना सी गोटे नुआ स्टाइल ऑफ पेंटिंग आनी गसले इफ नॉट न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग एग्जैक्टली माने तार गोटे नुआ फीचर्स थिला जे कि अन्य कोठु अलगा जेमिति मोनालिसा द फीचर्स अलगा थिला इन द सेंस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बाइबल एंड द लाइफ स्टोरी ऑफ जीसस इन दैट सेंस इट इज कॉल्ड एज मोनालिसा ऑफ इंडिया दैट आउट मेंस क्वेश्चन प्रीलिम्स रो स्पेसिफिक क्वेश्चन विषय बनै परिबो जस्ट रीड दिस आइडियलाइज्ड राधा से माने कृष्णा से ने तो देखले elongated eyes eyebrows इन तमु देखे छी sharp nose and also features राजा सवन सिंह few the names you just go through it यहाँ पर किशनगढ़ स्कूल पढ़ियो you should be in a position to or बानीथानी पढ़ियो you should be in a position to say again factual a patta in the context of Mughal miniature painting how many of you can say me what is mural painting I'm not asking miniature what is mural painting जो बॉल रे जो पेंटिंग then what is miniature painting जैसे कि पूरा छोटा छोटा माइन्यूट काम होतो डिटेलिंग काम होतो सेटा so in the now take your brain or mind to that of the miniature painting ऊपर तो क्लास है छी मुगल miniature painting consider the following statement okay which of the following are correct 1 2 2 3 1 2 3 okay fine the tradition of Mughal painting commenced माने start हला एमडी भाबियो commenced during Akbar's reign she specifically कहिची मुगल miniature painting माने मुगल रो माने गप स्टार्ट हो बाबर पाखरे एते समय नथिला हुमायूं पाखे तो दूर जाके नथिला मरि गेला लास्ट हला ए अकबर टाइम रे ही स्टार्ट हेची व्हिच मेक सेंस आ ता टाइम रे हेची बी अकबर रो को टाइप रो एडमिनिस्ट्रेशन थिला आई होप आई हैव सेड दैट बिफोर आल्सो अकबर जानि परला कि इंडियन मानक संगे लढी याकू जिति हबनी तनो करी राजनीति करी जितिबा तेणु करी से हिंदू सिस्टम को इंटैक्ट रखिला ग्राउंड रे हिंदू सिस्टम रे गोटे सिस्टम होची पेंटिंग आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर चाणी से सब मिसेबो
पेंटिंग इस्लाम haram, everything like that of the dance हेगला, म्यूजिक हेगला, पेंटिंग हेगला, जो थरे मन रखता, जो थरे ह्यूमन टाइम कंज्यूम हबो, जो थरे ह्यूमन टाइम कंज्यूम हबो, निजो को प्रोटेक्शन इस्लाम रे गोटिए कांसेप्ट होची सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन कांसेप्ट कोठ आसला, एथि पई आसला, Islam was rising in the sands of Arabs, so there were various smaller tribes fighting against each other, continuous war was going on। तो ता भीतर कहि परिबुनी कि मते मन होची मजी I will sing, hence I will dance, I will paint, तेणु करी इस्लाम में सब हराम कर दिया वाला, no singing, dancing, painting, this that and all, go and fight and save your own community, community feeling, community brotherhood, in that sense सब जिनसा हराम ही गला। बट अकबर जतले इंडिया आसी देखुची एठी इंडिया रे सब को होची ना वर्शिप होची, गॉड रो पोजीशन दिया आइची, स्पेसिफिक गॉड गॉडेसेस अछंती सब जिनसा पई की, पेंटिंग पई की भी, म्यूजिक पई की भी, डांस पई की भी, डांस पई की गॉड होचंती लॉर्ड शिवा, बुझला, म्यूजिक पई की ये गॉडेसेस की मदर सरस्वती। Hence, Akbar is saying and will find the benefit or will find the charm of the music, painting, this, that and all, and he will imbibe in his own culture or in his own administration। काहे कि I hope that what I'm saying, बुझियो जी? Yes, sir. से imbibe करियो कोथरे ना निज एडमिनिस्ट्रेशन रे हिंदू सिस्टम को से इंटैक्ट रखिबो, कन्वर्जन हेची मरामरी हेची, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस ताको पेंटिंग भल लागियो, ताको पेंटिंग रो कमेंसमेंट स्टार्टिंग अकबर रेन हुई हेची, डांस रो भी हेठ हबो, सब हिंदू सिस्टम को इंटैक्ट करके से रखिबो। ट्रेडिशन ऑफ मुगल पेंटिंग कमेंस ना, यस, ड्यूरिंग अकबर्स रेन पेंटर थिबो जहांगीर ता पुओटा, तणु करी पेंटिंग पीक को जीवो जहांगीर टाइम रे, कमेंस हबो अकबर टाइम रे, डिक्लाइन स्टार्ट हबो शाहजहां टाइम रे, डिक्लाइन हेई जीवो औरंगजेब टाइम रे, पेंटिंग स्टार्ट हबो अकबर टाइम रे, पीक को जीवो जहांगीर टाइम रे, शाहजहां टाइम रे डिक्लाइन स्टार्ट हबो औरंगजेब रे डिक्लाइन हेई जीवो, बुझला। तो फर्स्ट इज करेक्ट। अब कौन पे कि अकबर ताको इम्बाइब कला, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर फॉर यू। Illustrated manuscripts like Razmnama, Persian translation of Mahabharata, unusually features miniature painting, factual, এটা भी ठीक আছে। उस्ताद मंसूर कौन सा factual আসला, and we cannot help in it, served as a distinguished painter in Jahangir's court, এটা भी ठीक আছে। ये जोड़ा का factual है गला, at least first one is correct, जो थी 1 नहीं तो कट, ताले 1 2 1 2 3, ताले automatically 2 टा भी ठीक है गला, पूरा गेम है 3 ऊपर है, 3 टा फैक्चुअल, यू कैन सॉल्व दिस फ्रॉम दैट ऑफ द घटना चक्र और एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज। होपफुली यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। घटना चक्र करिया को पड़ियो, कौन सा पेंटिंग आला। रिगार्डिंग पेंटिंग स्टाइल्स ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, कोन कहली जहांगीर रेन रे पेंटिंग पीक को जाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तू जदी खाली एत्ती के जानि थबू मन लगिता जहांगीर टाइम रे पेंटिंग पीक को जाईची, इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ी ना, हाँ अकबर ठू बेसी इस्लामिक इन्फ्लुएंस रहइबो जहांगीर रो, ताठू बेसी रहइबो शाहजहां रो, पीक को जुहारी औरंगजेब रो। इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ी, तेणु कर इंडो अरबिक पेंटिंग बढ़िबो। अरबिक पेंटिंग रे कोन, ओके विल सी दिस। Jahangir's era saw the emergence of naturalistic painting style, तुम कहथली पिक को जाइथिवो naturalistic painting हबो, ठीक अछि। चलो 1 जोड़ी नहीं तो काट दियो, which of this correct, 1 अछि सब थरे। चलो decorative colors and frequent use of gold became prominent measures। now this makes sense, काहे कि ना या टाइम रे पिक को जाइछि पेंटिंग, ओके। अब this statement is factual, मैं मानुची factual। तू जदी भी जानि नथबू, तू जदी नेचर ऑफ जहांगीर जानिचू और जहांगीर को परिस्थिति रे किंग हेला जानिचू, इस्लामिक रूल रो नेचर जानिचू और जानिचू कि आ टाइम रे पेंटिंग पीक को जाइतला,
under that circumstances India was a very rich country to सबुता बुद्धि लगेले statement कोटा तोरा आपे ठीक है जो floral borders emerged as defining characteristics of painting during this period. Floral border again factual floral border माने गोटे painting एठी फुल 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 टाइप रो सब फोटो थियो. Let me show you floral painting of see this one is better. See this is called as floral painting. ये देखो फुल फुल सब अछि भितरे हला पेंटिंग टा अछि एठी भी देख पेंटिंग टा अछि ता ऊपर सब कोन अछि ना फुल फुल टाइप अछि एटा का टाइम स्टार्ट हेतला जहांगीर टाइम तनो करी कोनोसी गोटे इनोवेटिव टाइप ऑफ जिंस जदी आसीबो इफ नॉट ऑलवेज जहांगीर रो क्वेश्चन रो पेंटिंग रो सेटा मोस्टली ठीक हो एमिति ओवरऑल आईडिया करी कि मु सब बेले प्रीलिम्स को जाए तनो करी मोर प्रीलिम्स सब बेले बाहर भी थिला अकबर टाइम रे बहुत जिंस स्टार्ट हबो पेंटिंग जीव जहांगीर टाइम रे पीक को आर्किटेक्चर जीव शाहजहां टाइम रे पीक को आर्किटेक्चर रो पीक होची शाहजहां पेंटिंग रो पीक होची जहांगीर सबु जिंस डिक्लाइन करिवो औरंगजेब टाइम रे सबु जिंस स्टार्ट हबो अकबर टाइम रे इस्लामिक इन्फ्लुएंस आगो को बढ़ी जीवो बुझेला दिस मच इज क्लियर Yes. एरा सबु ओवरऑल गप्प ओवरऑल स्टोरीज रे ही क्लियर हबो जेंति पोस्ट गुप्त रे गोटे ओवरऑल स्टोरी थिला गुप्त रे गोटे स्टोरी थिला ऋग्वेद गोटे स्टोरी थिला एरा सब स्टोरीज रा ता बाद नॉलेज आसियो with reference to pahadi painting schools पढ़िया पड़ियो ना हाँ consider the following statements okay basoli painting यार अर्ली स्टाइल ता कहारा पहाड़ी सब पहाड़ी पढ़ी थौ टिके तो पढ़ी के जीवा को पड़ियो width is needed in film 100 थर मु कहिछि डेप्थ किछि दरकार नै ए जो स्टोरीज टिके अछि एंड वेट सब जिंस टिके जानि जा basoli painting draw the themes from गीत गोविंद एक्चुअल एंड भगवत पुराण एटा को जानछि ना हां एटा ठीक हो basoli artwork is a factual basoli artwork features flat compositions with special emphasis on jewel depictions. Let me show you basoli paintings. See, this is basoli painting Radha Krishna. Do not think in this painting that this is the only man and all these are women. Rather it is. We all are women. Here the Krishna does not represent man. He represents consciousness. Purusha. Purusha does not mean male. Purusha means consciousness. The difference between me and this pen is that I am conscious. That conscious aspect in me is God or Krishna. A Purusha. And this material aspect is called as Prakriti. These so-called gopis are Prakritis. This is the philosophy behind it. This art represents that philosophy. It is not that male-female love. It is that consciousness and matter conjugation which leads to this life form. The painting is this. I hope getting. Mythically, this painting means, according to the mythologies, this painting means mythically means all these are great saints. This women or the gopis once upon a time are great saints. ସେମାନେ ତପସ୍ୟା करचंदी तपस्या करे कि सुपर कॉन्शियसनेस को संगे लीला पई कि कम आइचंती वरदान मागिचंती ए स्टोरी रो निजर गोटे सिग्निफिकेंस अछि वी आर नॉट गोइंग टू इन दैट डिटेल दिस इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी दिस इज सुपर कॉन्शियसनेस दीज आर मटेरियल एस्पेक्ट्स getting that is basoli painting hence it has bold colors जाकि तमे इन देखिला
and emotive themes like that of the Vaishnavite literature. First point ठीक अछि. Start composition, we have seen it. Just go to the पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल आपको जेतले पेंटिंग रा क्वेश्चन पडियो अथवा टॉपिक आसीबो गूगल करिवु देखिवु जूम करके देखिवु ता माने कोन राधा कृष्ण कर जो लव थिंग्स देखेबो ता माने अलगा कृष्ण गोपी माने लव थिंग देखेबो ता माने अलगा एइने मु तमु देखैली कृष्ण गोपी कर थीम सेटा प्रकृति पुरुष गेटिंग राधा भी होचंदी कोन ना कॉन्शियसनेस पुरुष भी सेठी किए से राधा कृष्ण कर थीम रे दी जन जाक कॉन्शियसनेस कृष्ण गोपी को थीम रे मेटेरियल बॉडी एंड कॉन्शियसनेस राधा कृष्ण करे जोड़ा को फेमिनाइन मस्कुलिन कॉन्शियसनेस मिसी की इटर्नल कॉन्शियसनेस हो एरा सब हमरा पेंटिंग दर्शै छी सेरा सब सिंबलिक वे रे that is Indian form of painting that is not male female that is not Mona Lisa painting that is not religious painting getting the essence of Indian painting system Vaishnavite thought process similar thought process you can see in the form of Shiva Parvati consciousness Shiva is dead without Shakti बुझौची शिव मेटेरियल हे गले एठी शक्ति कॉन्शियसनेस हे गले राधा कृष्ण कर कृष्ण कॉन्शियसनेस हे गले बुझेला थे कि यस सर एइने तू जाय कि 11 को पढिबू ना ऑल दीज आर फैक्चुअल पार्ट्स नॉर्मली तुमको लागिवो कि सेमतोटे आर्ट देखाइ छी ए सब आर्ट देखि कि इट इज बीइंग सेड दैट द कृष्ण वाज अ वुमनाइजर बट कृष्ण is the consciousness he's beyond everything every life has got consciousness that is the representation in the form of Krishna बाकीरा पढ़ दो और किछ नाही इधर कोन थरे पेंटिंग आइला पेंटिंग रो सिग्निफिकेंस हमको एबे मु कोन करली जणैली रीजनल पेंटिंग ट्रेडिशन कोन थरे फैक्चुअल चंबा पेंटर्स adopted wall painting technique into their miniatures माने मोरल टाको नै कि मिनिएचर को लेचंती फैक्चुअल ठीक अछि जस्ट गूगल इट आउट जम्मू स्कूल पेंटिंग एम्प्लॉय डार्क कलर्स and reflect local environmental influences कोन था फैक्चुअल अछि संसार चांद एटा को मूवी जानथली is associated with गुलर कलाम ट्रेडिशन मुटा बनौथली एटा को मूवी नै जानथली हम लाइफ को टिके टफ बने पे एटा को मु पकेच हला एटा को मूवी जानथली ताले कोन करिया 1 2 तो हे जैछि जोठी 1 2 नै तो काटो 1 2 3 1 2 एठी मोर और लेस पिला माने पढंती बेतले मूवी स्टूडेंट थली मूवी पढथली किछ नाही इट इज फैक्चुअल नथिंग टू एक्सप्लेन एठी टिके बुझी लगे हबो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग डेक्कन को डेक्कन को जुगरी हो दक्कन द सदर्न consider the following statement okay which of the following are correct पता चला Deccan school evolved as the derivative of the Mughal miniature tradition था we do not need मान सी कहूची आमे आमो स्कूल ऑफ पेंटिंग मुगल मिनिएचर पेंटिंग रु बाहर वेट आखि बंद करके एटा कोन हबना भूल लेजु एटा प्रीडेट करूची मुगल मिनिएचर पेंटिंग को किंबा मुगल पेंटिंग को हां इन्फ्लुएंस किंतु हेची इन्फ्लुएंस हबो ना काहे कि से रूलिंग क्लास रे बस पड़ले तणु करी सैटिस्फाई करा हबो तणु करी जदी एटा हेई थांता इन्फ्लुएंस तले हेई थांता डिराइव्ड लिखि देला तणु करी भूल गेला तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग जोठी वन नहीं तो काटे 1 2 1 2 3 2 टा आपे ठीक है सल्लानी पूरा गेम में 3 ऊपर early Deccani painting shows influence from Ellora murals and Mewad Malwa miniature styles जानिनु जाकी तू जानिनु धर भी जानिनु ताले टिके ठीक है देखे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी जणो को कॉन्ट्राडिक्ट करूची ठीक है जो देखिबू दिस इज कॉल्ड एज बुद्धि लगेगा
वन आउट टू दी जन को कंट्राडिक्ट करूची वन टा कहूची डेक्कन स्कूल इवॉल्व होउची डिराइव होउची कोठू मुगल मिनिएचर पेंटिंग रू टू कहूची अर्ली डेक्कन पेंटिंग ये कहूची स्टार्टिंग होउची मुगल रू ये कहूची इन्फ्लुएंस नोची एलोरा रू आ एलोरा टा मुगल को प्रीडेट करूची तेणु करी जोड़ा को स्टेटमेंट 1 एंड 2 कॉन्ट्राडिक्टरी होउची 1 2 जोठी थिबो सेटा ताले हबनी ताले जो 1 2 एठी अछि हबनी 1 2 एठी अछि हबनी 1 2 एठी अछि हबनी बुझला ताले मो पर खाली वाला 2 3 आंसर इज 2 बुझला एंड दिस पार्ट इज अ फैक्चुअल पार्ट नो डाउट इन इट एटा को तमे जानथियो बीजापुर स्कूल पढ़ी माने तो इब्राहिम आदिल साहब को पढ़ी जदि पढ़िनो ताले तो भूल गो एंड डू घटना चक्र 1 सेकंड बेसिक मिनिमम नॉलेज तक रखिया को बा पढ़िबो देयर इज नथिंग लाइक टेक्निक कहि दला कर दे गेली हरी सेमती होबनी बेसिक नॉलेज तो दरकार एठी हमें कोन नॉलेज होगिलु जोड़ा को कॉन्ट्राडिक्ट होउची तनो करी 1 2 जोड अछि आगे तो काटी दियो पूरा गेम है 3 ऊपर 3 टा होउची कि ना हां 3 टा होउची ताले 2 3 विल बी द आंसर बुझियला Yes. एटा फैक्चुअल पार्ट टा वी कैन नॉट हेल्प हियर बट स्टिल देन या भीतर हमें एमती एनालिसिस करके कर दे पारिउ टेल मी व्हाट इज मुंडा रिबेलियन So मुंडा रिबेलियन बिरसा मुंडा अंडर हेतला ताकर बहुत सारा रीजन थिला माने कोठी हितला एक तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रे तापरे तापर ताकर बहुत सारा रीजन थिला जेमति कि फर्स्ट थिंग्स हला मिशनरीज माने जो क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दोथले ट्राइबल्स मान को तापर द्वितीय जिंस हला गोटे कि माने टैक्सेशन सिस्टम ऊपर भी तांको बहुत प्रॉब्लम थिला कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू तांको चार्जेस करा होतला ए सब जिंस को नै कि बिरसा मुंडा लीडरशिप रे ई मूवमेंट स्टार्ट हेतला 1895 रो 1899 जाय चलथिला was बिरसा मुंडा बीन सीन मु ततेटा क्वेश्चन पचारुची बिरसा मुंडा को तांको फॉलोअर्स माने अवतार टाइप देखुथिले कि आदि से निज को ही डिक्लेयर करथले मु गुटे अवतार तांको धरती आबा बोली भी कहा जाउतला तो से निज को प्रोट्रे करथले से हिसाब रे लोक मन तांको से लेवल रो रेस्पेक्ट आजि पर्यंत भी इवन दोचथि एति जिंस तू एटा पढिया आगुरु भाबिबु आगुआ एठी जिबुनी रे बुरसा मुंडा रेबेलियन देइछि माने तू आगो सेति भाबिबु 60 सेकंड मो पाखरे अछि जिंस तक तू आनिलु ताकू भाबिबु 3 सेकंड 4 सेकंड भीतर दिस वर्क्स इन अ वेरी फास्ट वे तापर आसो करेक्ट को व्हिच ऑफ द स्टोरी फॉलोइंग करेक्ट तापर एठी जिया बुरसा मुंडा ले मुंडा अपराइजिंग ठीक अछि लेड बाय बिरसा मुंडा एठा जाके स्टेटमेंट ठीक अछि इज नोन एज उलगुलन द ग्रेट रिवोल्ट या माने ही से पढिचु माने एटा पढछु ना तो एटा को सुनिचु जेमथले सुन नोन एज उलगुलन वन तो भाई पूरा 100% ठीक अछि वन जोड ने तो काटा 1 1 2 1 2 3 हो गई 2 3 पर इन गेम रहला इनिशियली a religious movement इन तू कहलु निज को से डिक्लेयर करथिबे बहुत बही लिखुची प्रॉफिट बोली बहुत बही लिखुची गॉड बोली व्हाटएवर जोड़ा का जगह समान नहीं जो इनिशियली a religious movement ठीक अछि it later incorporated agrarian and political dimension स्टेटमेंट 2 टा भी ठीक अछि 1 2 जोड़ने ताको काट 1 2 1 2 3 आगो छक पकी सब ठीक the rebellion was predominantly non-violent in nature या टू बेसी मरामरी आगुडी है so it was violent in nature ताल थीटा भूल गेला 3 जोड़ी अछि तो काट so 1 2 is left पढिबु गैदर करिबु नॉलेज तक आगा जहा जानिचु जदी पढिनु ट्राइबल मूवमेंट रो गोटे निजर गोटे गप अछि आउ सबु आउ ब्रिटिश विरुद्ध रे जदी जहा गप अछि सबु तक होउची इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन
जेतु ट्राइबल टा अछि ट्राइबल कल्चर भीतर से माने पछंती आउ गोटे गप होची कोन मिशनरीज माने पसिबे मिशनरीज मिशन रे आछंती तेणु के ना मिशनरी को मिशन आछंती से वर्ल्ड को क्रिश्चियनिटी आडू नेबे क्रिश्चियनाइज करिवे ब्रिटिश might be Christians. British might be Christians, but they are Protestants. They need money. They are capitalists. But end of the day, they are Christians. ସେମାନେ डायरेक्ट कन्वर्ट करू नाहंती किंतु कन्वर्ट करिया पे कि मिशनरीज मानको फैसिलिटेट करूचंती एमन जदि कन्वर्ट करूचंती से ताको मारू नाहंती ताको फैसिलिटेट करूचंती बुझुची रिलीजियस थॉट प्रोसेस ताको से इंटैक्ट रखुचंती निजे कन्वर्ट करू नाहंती मिशनरीज मानको छाडुचंती पोर्तुगीज हेतिले निजे कन्वर्ट करथांता स्पेनिश हेतिले निजे कन्वर्ट करथांता फ्रेंच और ब्रिटिश निजे कन्वर्ट करिवनी बुझुची तेणु कर तू देखिबू से लेखुची से कोन लेखुची ब्रिटिश पॉलिसीज फैसिलिटेट द मिशनरीज ना हां स्टेटमेंट ठीक अछि काहे कि या पछ गप कोन ना कैपिटलिस्ट ले समय ताको टंका दरकार आग टंका आसीओ तापरे रिलीजन आसीओ टंका आसुची मोर गोटे साइड रु आउ जने के जदि मोर रिलीजियस कामटा को कर दोउची मु ता ऊपर ताको बाधा देबिनी सो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ए जोड़ा को पॉइंट मोस्टली कॉमन रहिबो ट्राइबल अपराइजिंग रे बाकी तक मा कहबो नॉर्मल गप रहिबो गोटे लीडर थिबो गोटे जागा रे होउथिबो ब्रिटिश साइड रो गोटे लीडर थिबो गोटे मूवमेंट हबो से माने हमहु सपोर्ट करबे एइना तमर बेसिकली काम एया रहिबो जेतक मूवमेंट अछि ताको लीडर ना मन रखिबो डेट टाइम जदी मन रहिला किबा ओवरऑल गोटे टाइम ताको मन रखिबो आ ब्रिटिश साइड रो की लीडरशिप नेथला ताको मन रखिबो आ तार कॉज कोन थिला दैट्स इट चारटा पांचटा पॉइंट भितरे तू मेंस भी लिख देगी आसियो तू प्रीलिम भी कर दबु आ एतक तुमको करिया को पड़िबो एतिक नॉलेज हे साला पारे मु आसीबी ए क्वेश्चन को नॉलेज तो दरकार which of the following strategies okay were employed by peasant movement start गला peasant movement रो कोन थरे सही समान गप मूवमेंट पढ़े पड़िबो ना हां लीडर ना को जागा रे हितला को टाइम रे हितला ओवरऑल जदी गोटे टाइम बनेला भलो कथा आ हां को प्लेस माने को स्टेट रे हितला बंगाल मूवमेंट कि बॉम्बे मूवमेंट को जगह रे ट्राइबल मूवमेंट लाइक दिस आ माने कहिथो ना गोटे एक्सप्लॉयटेशन ने माने कहिथो मोर और लेस इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन ठी हिथो अब बेसी गप चलथो को अराउंड रे टैक्सेस अराउंड और जेहेतु रिवोल्टा पीसफुल तो हेई नथिबो पीसफुल हे नथिबो मरामरी हेथिबो ओके आउ कोन देखिबी टाइम फेस्टा 1857 पूर्वरो ना 1857 पर 1857 पर हले कोन हबो 1857 पर हले एटा होची ओवरऑल गप गोटे क्राउन पळे आसी डेमोक्रेसी पळे आसी सो कॉल्ड जुडिशियरी सिस्टम थिबो सो कॉल्ड जुडिशियरी सिस्टम थिबो जस्टिस मेकानिज्म पछे तमको न मिलु डिफाइन हेथिबो तेनु करी एक तो रिवोल्ट भी हबो आउ गोटे कोन आड हबे थरे ना वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास गोटे अछि से माने हमर ग्रीवेंसेस को सुटेबल प्लेटफॉर्म रे रिप्रेजेंट करूथिबे एटा 1857 पूर्वरु मोस्टली नाही 1857 पर मोस्टली अछि बुझियला कि यस पीजेंट मूवमेंट रो 57 पूर्वरु वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास अछि से रिप्रेजेंट करि पारे हम मानुची मोस्टली 1857 पर सेटा हबो इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन गोटे हेइची टैक्सेशन सिस्टम हेइची को जागा रे हेइची लीडर के ब्रिटिश साइड रो लीडर के आउ व्हाट वाज द कॉज ऑफ इट
चारटा पांचटा पॉइंट सब मोमेंट रो मु मन रखिबो जदी मन नाही ताले इंजीनियरिंग रे हमर कोनोसी शिक्षा करि जोडा ओडा हम दी दी रिवोल्ट इंडिविजुअल करिवो तमर मन नाही हमर मन देन physical attack on individual makes sense correct one one after that motivate gala eu देखि जानि गला one one refrigerator to pay rent makes sense you put job body in what ethic new physical account individual factories makes sense one refrigerator pay rent 2001 photo use of the legal mechanism access the right on properly 80% or it mostly now overall knowledge ଥିଲେ पूरा पढ़ेंगे पढ़ियो 30 लागला Yes, sir. now tell me what you know about individual revolt reasons माने theoretical reasons को फोर आ जाए वो इंडिविजुअल माने माने राजी हो ना फोर्स माने तरह को रेवेन्यू डिमांड करा जातो बेंगल वाला 1888 का जाते 1888 तर लीडर्स माने लिटल ना बड़ो सर उद्धव आत्मा कंपनी को another things so some things one is coming one is kicking movement movement जो पंजाब रे kicking movement सर मणिपुर मणिपुर गैलेक्सी जोन आसाम सारी नॉट चले मणिपुर नागालैंड मोस्ट
ହେଲା सर वो लीडर का नाम पढ़ दिगंबर बसव दिगंबर बसव विष्णु बसव वो सरकार का लीडर बना कर सर जो राम जो ये स्टार्ट जो मैंने तब बिलीव करो से मन को का तो ये टाइप हां guess it. Say it is sick. Okay, fine. Tell me what is Kukalka movement. Question आगु किसी लॉकिंग बेसिस knowledge. What is Kukalka movement? आपको ठीक थी जो नाम वाला मूवमेंट से सेटा हां सही हमारा जो पूरी हे देला जा कहूछु जब रहितला by the fast up will get wrong it represented fast significant response and level है ना बस स्क्रीन पे जा जाओ हाला yes बेसिकली उठेला पंजाब रहितला ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କହିଛନ୍ତି पंजाब ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଶିକ୍ଷିତ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ ରିଭାଇଭଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେସିକଲି ପଲିଟିକାଲ ଲେଭେଲରେ ହଁ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ ସେ ଅଛି ବେସିକଲି ଶିକ୍ ରିଭାଇଭଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଟା दस गुरुवार ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ନାମଧାରୀ ଗୁରୁବାର ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଡିସାଇଡ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଗାଉଥିବେ the saying of the principles of the guru ସେ ଯୋଉ ତ ରିଚ୍ କରવાનું କୋଉ और कुका का ये मतलब ये एंड बड़ा प्रॉब्लम है कुका में गुरुवार डीसाइड करନ୍ତି नामधारी वाला से मूवमेंट करते तो तो सी मूवमेंट आता तो काम करले सोशल मूवमेंट रे हमने सोसाइटी को बात करी ऑनलाइन क्लास हमने रिलीजन आउट कारण सोशल जनरेटेड और लिविंग टू दैट द रिलीजन और स्क्रिप्चर्स जो बेंगल पढ़ा नामधारी मन कर other basis of the things which is for fighting of the movement area is to for the with this jaga janli leader na janli basis janli how overall story mu jani chi movement mention कर ठीक करके 2 मार्क नहीं के आसी प्रथम टा भूल गेला कारण एटी से बेंगल लिख देछि बेंगल लिखछि भूल हैला 1 काटे आंसर 2 3 तू खाली जानतो कुका मूवमेंट पंजाब रे बोली तले हे के असला कुकी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट रे इने तमने समस्या जानिचो कुकी इज अ ट्राइब बुझियो जे कोठी अछंती मणिपुर रे बेसिकली नॉट मणिपुर रे म्यांमार रे भी अछंती नागालैंड रे भी अछंती पार्ट्स ऑफ मिजोरम रे भी अछंती असम रे भी अछंती सर चिट्टागोंग हिल्स हां चिट्टागोंग हिल्स मुस्लिम माने कुकी मानो को मारले चिटागंग हिल्स रे
म्यांमार भितर भी ट्राइबल रिफ्ट है कि तांको मारले जोठी समस्त जते तांको मारिले तांसे माने आसिले कोठी की इंडिया रो मणिपुर रो हिल्स रे कुकी माने थांती कि माने तांको आश्रय देइथिले को माने Meiteis are the true inhabitants of Manipur. True inhabitants. तांकर population कमी की it has went below 40%. से माने वैली रे तांको जगह न देखी हिल्स रे देइथिले रहया पे बुझला तापर एठी जेमति मुस्लिम्स कर ऑनस्लॉट सला सेपटे ट्राइबल वारफेयर के सेपटे ऑनस्लॉट सला एमाने आसिले इंडिया रे मणिपुर जोन रो कुकी माने तांको आश्रय देले तांको संख्या बड़ी 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 गला जेमति सबडे मरचंती तांको पारा किसी बाट नै से एठी ही रहिबे तेणु करी से माने एने कुकीज वर्सेस मैतीज गोटे conflict चलची one of the major causes this apart from that we are not going over there apart from that drugs business would have drugs business रे China role is this that and all you'll see that in IR classes or internal security classes that is the cookie versus Meitei struggle of Manipur that is happening today it has got something history also এটা হচ্ছে cookie এটা হচ্ছে আমরা কুকা which of the following nationalist leaders conducted an economic critique of British rule between 1870 to 1905 एटा तमे आखि बंद करी कहि दे पारि दादा भाई नारोजी कोन लिखथिले को जिनसर ऑथर दादा भाई नारोजी poverty and unemployment कौन पे कि अन ब्रिटिश तुमको लास्ट क्लास रे कुआ हिच हला जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे सीए इकोनॉमिक क्रिटिक थिले कि ना हां ए क्वेश्चन टाको मन लगी जाइथो मोस्टली सबुठी पचारे भी जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ना हां 1 टू द हबो रोमेश चंद्र दत्त ही वाज मोर वोकल देन दादा भाई नारोजी मोर वोकल रोमेश चंद्र दत्त ना हां एटा भी हो सो आंसर विल बी 1 2 3 फैक्चुअल the economic history of India. Remember this. This could be a separate question. This could be a separate question. Regarding Indian Association, okay. Mane eta hochi pre-Congress Association. Congress purbo. Makes sense. Consider the following statement. Pre-Congress dekh. जदि बीजेपी लेड गवर्नमेंट रे गांधी पचारिबनी धर नेहरू पचारिबनी कांग्रेस पचारिबनी ताहले मॉडर्न हिस्ट्री ताहले बढ़ला कोन एआई तो अछि ना 80% से पचारिबनी ताहले एई सब पचारिबो ट्राइबल मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट वुमेन रोल एजुकेशन प्री कांग्रेस एसोसिएशन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एगरा पचारिबो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मेडिवल से कोन पचारिबो मेडिवल रे थिंक प्रैक्टिकली से भी मुगल्स को टेक्स्ट बुक रु काढुची दिल्ली सल्तनत को डाइल्यूट करी ताको जदी कमौजी से को पचारियो प्रथम धर्म से तले पचारे स्टार्ट कला टेंपल आर्किटेक्चर इन मेडिवल टाइम्स एट सब हेची सेतले मु को कोथली मेंस लिखथुली माने इट वाज अबव एवरीथिंग माने मु मो 14 जन्म रे भाबी भी नथली एमतिया टेंपल आर्किटेक्चर इन मेडिवल टाइम्स कौन हम देखला बेलू तापर कोचिंग सेंटर वाला सब पढ़ा स्टार्ट कले सो देयर वाज ए ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ दिस आल्सो नाउ यू आर गेटिंग द नेचर ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क तेणु करी एटा होची प्री कांग्रेस एसोसिएशन बिफोर गोइंग टू दिस टेल मी द नेचर ऑफ प्री कांग्रेस एसोसिएशन ओवरऑल स्टोरी टा को मते जहाँ जानी कुह अरे जल्दी को जहाँ जान किसी जाननु गीत गाई दे किंतु गा and those who are not speaking learn speaking out सेटा जेतिके भी मूवमेंट है जे प्री कांग्रेस आगु पर्टिकुलर कोन से गुटे सेक्टर रिलेटेड थिबो किछ किंबा किछ पीजेंट्स रिलेटेड हे गला
कि जमींदारी मान को रिलेटेड हे जिवो मन बेसिकली जोटा कांग्रेस रे गोटे ओवरऑल नै कि स्टार्ट करथले से जिंसटा पार्ट पार्ट रे डिवाइड होतला कि विडो मैरिज कथा कहला कि सोशल रिफॉर्म कथा कि रिलीजन रिफॉर्मेशन पई काम करिसंते से टाइप ऑफ मूवमेंट एसोसिएशन उडा थिला मोर और लेस लोकल हेतो नेशनल हवा पई कि चेष्टा चेष्टा करछन्ते किंतु हेई परिबनी काहेकि ना प्रिंसली स्टेट्स अछि कास्ट अछि डिसऑर्डरनल ओवरऑल स्टोरी गोटे तमरो माइंड भितरे रहिला तापर कोन करे अछि प्री कांग्रेस बॉडीज रो फाउंडर किए केबे हेइतला बेसिकली से कोन काम करछि दैट्स इट ए तीनटा चारटा पॉइंट मन रखे समस्त ना हो सबथुर पढबे देख आ कोन मेजर कामटा से करिछि before going to this question tell me if there was another part if there was pre-congress organizations or political parties why exactly congress was very successful and why it truly became national national केम थी गला सर फर्स्ट पेज रे जतले स्टार्ट हेतला फर्स्ट तो माने ब्रिटिशर्स माने यूजुअली कोनोसी उटे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हेले ता ऊपर किछि ना किछि सैंक्शंस लगे कि बंद कर दोथले किंतु एटा से माने जतले एओ ऑप्टम जब एओ ह्यूम रो हेल्प नै कि जतले स्टार्ट करछन ताको गोटे लीगलाइज टाइप रो मिल गला कि हां कंसेंट अछि ब्रिटिशर्स मान करो तापर धीरे धीरे विथ टाइम कोन हला जहां भी छोटो छोटो ऑर्गेनाइजेशन थिला सेउडा भी कांग्रेस रे धीरे धीरे मर्ज हेबा को लागिले जेमति कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को स्टार्ट हेतवा ऑर्गेनाइजेशन हो तो तापर धीरे धीरे से माने मास मेजॉरिटी रो आवाज को उठाया को लागिले जो आगरु कोन होतला ना जो भी छोटो छोटो ऑर्गेनाइजेशन थिले मे बी बेंगल पर्यंत सीमित थिबे किबा मद्रास रे इंडियन नेशनल कांग्रेस एमती उटा ऑर्गेनाइजेशन थिला जे कि इंडिया सारा बुली बुली सब जगह रे मीटिंग्स रु करिकि लोक मान को इंक्लूड करथुला आउट मास कथा आनथुला ठीक अछि ह्यूम ही डिक्लेयर कला इट्स अ नेशनल बॉडी उमेश चंद्र बनर्जी डिसऑर्डरनल अदर्स वर देयर ह्यूम इटसेल्फ डिक्लेयर कला नेशनल बॉडी आगुर नेशनल बॉडी ही नथिला and western educated middle class were seeking for a leadership कारण 1885 आगुरु गुडा जिंस आइछि सेथरु गोटे थिला इलबर्ट बिल सेथरु गोटे थिला इलबर्ट बिल and various smaller political bodies organization आसी जाई चंती तनु हमर टेस्ट अछि कहार पॉलिटिकल बॉडीज रो हमर टेस्ट अछि and press media रे इंडियंस मानकर रोल एसोसिएशन बढ़ी and educated वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास रो संख्या भी बढ़ी पूरा देश रे बढ़ी कारण पूरा देश रे ट्रेड एंड कॉमर्स होउची पूरा देश टिके टिके की अछि तमे सब स्कैटर्ड ही अछंती गोटे नेशनल बॉडी हमें खोजु थलु ह्यूम रो सपोर्ट मिली गला किबा ब्रिटिश रो सपोर्ट मिली गला हमु सप्रेस करलेनी से माने चाहुथिले कि एटा गोटे माने कोन सेफ्टी वाल्व टाइप राम पे काम करू तेणु करी कांग्रेस ऑफिस सब आसीबो कांग्रेस ऑफिस बर गछ तळे आसीबो पोस्त गछ तळे आसीबो खाली से गां रो यूथ माने जाय कि ठिया कहबे वी आर ओइंग आवर एलिजेंस टू कांग्रेस हेंस लोकल कांग्रेस पार्टीज विल कम इनटू पिक्चर केई कोन खाली ठिया कि कहबे कि आमे होजु कांग्रेस आमे होजु कांग्रेस सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप न जानी थिला पर भी पूरा देश जाके वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास मिसी की एलिजेंस दे देबे तापर गोटे गोटे रिप्रेजेंटेशन ना कर जीवो within a week or two congress will become a national party और ए जिंसटा अन्य लोकल ग्रुप्स को पाखे नथिबो कारण लोकल ग्रुप द्वारा लोकल इश्यूज लोकल लीडरशिप लोकल थॉट प्रोसेस थिले नेशन स्टेट रो थॉट प्रोसेस ता पारे नथिला बुझले त कि गेटिंग यस द्वारकानाथ गांगुली एथर में कौन देखिया तुम कौन करितली सबले जानिबो फाउंडर ना एटा फाउंडर ना लेखुनी वाज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन इंडियन एसोसिएशन द फैक्चुअल डाटा हां इट वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस association advocated for tenant rights makes sense supported the formation of rats mane peasants unions also makes sense 1 2 which one is correct in early 1880s
it mobilized large peasants gatherings at a factual in districts to back the Bengal tenancy bill. एटा यार प्राइमरी काम थिला यार होची एटा हम कहितली जागा लीडर ना प्राइमरी काम कोन प्री कांग्रेस एसोसिएशन जेतो बॉडी अछि मोर और लेस एमती पढ़ी आसी पढ़ दो एरा सब टिके टिके सन्यासी rebellion. What is Sannyasi rebellion? Which of the following correctly matched? Sannyasi rebellion कोठी first of all Bengal ठीक अछि चोर uprising also Bengal लेक्सी राजस्थान बोलो चोरटा कटला केट्टूर uprising मु मन थली के फॉर कर्नाटका के फॉर केट्टूर एमती मु मन थले एटा भी भूल हबो भेल uprising जदि भी तमे पढिन ज्योग्राफी रे पढि जाइतबो ट्राइब्स कोड अछन भेल ट्राइब ता सही पटा अछन मोर और लेस एमपी रे भी अछन जोकि एटा महाराष्ट्र हबो 1 and 4 will be the answer पढाला वाला एक कौन दे चांस तो 1 and 4 जेति की बेसिक जिंस कहली सेति मन रखी जीवो एटा कोन पचाल ना लोकेशन आ कोन पचार परिबो ना लीडर आ कोन पचार परिबो इशू कोन थिला आ कोन पचार परिबो ब्रिटिश साइड रो की लड़ थिला ए चारटा भीतर काम सर दियो सब तक टिके देखि जीवो चोर रे कोन हितला किट्टू रे कोन हितला सन्यासी रे कोन हितला इजी with reference to 1897 plague outbreak in Pune गोटे plague हेतला तो जानथिबो न जानथिले एने सुनियो consider the following statement ओके धर मु पढिनी किंतु हम एटा पढिथिबो धर पढन बाल गंगाधर तिलक endorsed accept कले the government's plague control measures माने दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल पर जदि किछि जिंस थाए बाल गंगाधर तिलक विल सपोर्ट द ब्रिटिश नॉट ह्यूमनली पॉसिबल वन टा तो कटला वन कटला खाली रे पूरा ने गेम रे 2 द चापेकर ब्रदर्स ए माने मारथिबे assassinated Rand and Lieutenant Ayest Colonel Rand and Lieutenant Ayest मारिथिले प्रॉपर मारथिले in response to resentment against official plague policies correct तो जदि मेरी नेशनलिज्म पढ़ी थबु तले चापेकर ब्रदर्स कर पॉइंट निश्चित आसियो चापेकर ब्रदर्स कर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होचंदी सावरकर any name including that of Bose even that of the Bhagat Singh and comrades anyone jaharo samastankar philosophical mastermind jodi ki thibe se hochandi na ki na Veer Savarkar BD Savarkar hence British were forced to take him to Kalapani he is the only man in history to get lifetime imprisonment twice and he was such a big threat he cannot be kept in India आउ समस्ते मोर और लेस इंडिया भीतर थांती याकू इंडिया बाहर को निया एंड ही कैनॉट बी किल्ड ताको मारी हबनी हेले को हबो ना रिवोल्यूशन विद इन इंडिया मोरल थॉट प्रोसेस किंबा ये ताकर जे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थिले ही वाज वीर सावरकर बोस सावरकर जदि माने समस्त पे इंस्पिरेशन थिले ये थिले मु बुझुची किंतु एबे विथ टाइम एटा एते कंट्रोवर्शियल फिगर काई के ही जाइचंते गांधी जी को केस पर भी तो तांको माने इट इज नॉट इवन ओनली गांधी जी's केस इट इज आल्सो इंदिरा गांधी हैज प्रेज्ड वीर सावरकर एंड इंदिरा गांधी तांको नारे फोटो रे पोस्ट स्टैम्प जो ना स्टैम्प पोस्टेज इज स्टैम्प इंदिरा गांधी नार पोस्टल स्टैम्प भी इश्यू करथिले all these are recent dramas that are happening because of the few jokers so we are not going there anyone
who is an independence fighter or our forefather, we will not question them. So we are not even questioning Nehru or Gandhi. आमरी forefather माने ठिया हिथले गांधी पछपटे or Nehru पछपटे or Bose पछपटे. So questioning these people is questioning our own blood. And those jokers who are questioning Savarkar are jokers, so they should not be taken very seriously. So if you want to know about Savarkar, then read British history, not the leftist communist history written by our own people. JNU. Which of the following statement is incorrect? Incorrect को चला, correct no. माने ठीक है ले भूल हो, भूल ले ठीक हो. Regarding Deccan riots of 1870s. Deccan riots of 1870s. Okay. What do you know about the Deccan riots? 1870 मु तुम कौन कहली बुद्धि लगे संग संग धर पढ़िन. Deccan रे riots ହେଇची धर मु किछि जानि पूरा ब्लैंक. कौन तो गोटे बुद्धि लगेबी मु थिले एम लगेता. Deccan रे riots ହେଇची. Deccan टा साउथ रे आउची. साउथ रो नेचर अलग है, नॉर्थ नेचर अलग है. Riots ହେଇची माने पीसफुल तो हेइ नथिबो. आउ 1857 पर ହେଇची. माने एटा होची ब्रिटिश टाइम रो. ए माने एक्सप्लोइटेशन तो करिसंती. आ एटा डेक्कन रे हेची हला माने नॉर्थ रे बसची हमर जमींदारी. ताले डेक्कन धरा पढ़िनी हला. ताले जमींदारी तो एठी हेइ नथिबो. मु एई टाइप रो गोटे गप भाबिबी. और लिखिछि इनकरेक्ट माने ठीक हेले भूल हो, भूल हेले ठीक हो. मग स्टेटमेंट ता ठीक ना भूल मु ताको देखिबी. आंसर कौन हो देखिए स्टेटमेंट करा मोर ठीक अछि ना भूल अछि. Deccan riots occurred in areas governed by zamindari land revenue system. जमींदारी हबनी महाराष्ट्र जोन रे आमे पढ़चू. महाराष्ट्र जोन रे कोन थिला ना रेवतवारी. पंजाब जोन रे कोन थिला ना महलबारी. मोर और लेस बेंगल जोन रे कोन थिला ना जमींदारी. प्रथम स्टेटमेंट ही मोर भूल गला. बुझला यदि भूल गला ताले आंसर ता ताले एटा मोर ठीक है जीवो. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल जस्ट चेक इट. बुझियोची तमे जदी भी न पढिथिबो किंतु या पई कि ओवरऑल नॉलेज दरकार है. कोन मु जानि छि जमींदारी कोठी अछि माने मु ब्रिटिश रो रेवेन्यू सिस्टम भी जदी जानि कि जाइथिबी ताहले मु डेक्कन राइट्स न जानि थिले भी कर दे के आसी. ताकू कोनती width of knowledge. Social boycott was a tactics employed during the riots. No, the riots led to the enactment of Deccan Agriculturist Relief Act of 1879. जदि भी जानना but make sense. किंतु तमे already answer पाई सालनी. पूना सार्वजनिक सभा under Justice Mahadev Govind Ranade, MG Ranade. एठा जानता ठीक अछि. Supported the movement ना. जदि भी जानिनु ताले एटा को भूल करी कि तो आंसर टा टिक मार दी परिबु. बट स्टिल आई विल से यू कि डेक्कन राइट्स को पढ़ी कि जा. राइट्स फाइट द्वारा सब पढ़ी कि जा कारण से गांधी नेहरू कांग्रेस पचारियोनी. बुझला बुझियोची ना मुई कहूची मुई बुझुची. बुझियोची. See, the things are not that easy. जो स्टाइल तुम कहूची things are not that easy. Deccan riots पढ़े पड़ियो. जदि न पढ़थियो ताले एई ज्ञान रा लागियो. जो स्टाइल में तुमको बुझेइली ता पई कि ब्रिटिश रा माने पढ़िया को तो कोन ना कोन गोटे तुमको पढ़ियो. ताले ब्रिटिश रा रेवेन्यू सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़िथिले ही एटा हबो. You have to study. किछि शॉर्टकट फटकट किछि नहीं. Consider the following pairs of associations and their leaders. या तो क्वेश्चन आ किछि नहीं. प्री कांग्रेस एसोसिएशन रे या लीडर या जगह या काम या सेति हमें इने जस्ट देखि के आसिले. इने संग संग देखले पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे एटा तो ठीक अछि. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बाय अ वेरी बिग मैन फिरोज शाह मेहता.
कांग्रेस बड़ लोकटे भी ये एटा भी ठीक अछि फैक्चुअल ना मद्रास महाजन सभा साउथ साउथ रो गोटे विराट बड़ ना होचंदी सुब्रमण्यम अय्यर इट्स अ वेरी बिग नेम सो 1 2 3 फैक्चुअल और एमिति ही क्वेश्चन आसीबो तमरो फैक्ट बेस्ड लीडर्स का ना न्यूज़पेपर ना को लीडर को न्यूज़पेपर बनैथिले मन रखे पड़ियो बाट बाट किछि नै in the context of British efforts to promote Indian studies काली हमर क्लास रे थला ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट डिबेट मन पड़ची ओरिएंटलिस्ट भी प्रो ब्रिटिश एंग्लिसिस्ट भी प्रो ब्रिटिश rather they are British Anglicist will win that's a different thing but if British wants to rule India, they need to know the culture of India. They need to know the ethos and the philosophy of India. Hence, for that, they are studying India. To study India, you need to study Sanskrit. You need to study Sanskrit. Because the scriptures are written in Sanskrit. Warren Hastings, factual, promoted Sanskrit studies to revive the language. Eta prakutare revive the language nathila. Prakutare thila to study the culture of India. लैंग्वेज टा रिवाइव हे गला आ ब्रिटिश भी से कहउची टू रिवाइव द लैंग्वेज हम बुक भी कहउची तनो करे स्टेटमेंट वानाला सितार इंटेंशन केबे नथिला टू रिवाइव द लैंग्वेज ही डज नॉट गिव अ डैम अबाउट इट किंतु से संस्कृत को प्रमोट करिची इंडियन कल्चर बुझिया पेंगी सेथरे लैंग्वेज टा डेड हे आस्तला रिवाइव हेची ना हां इन दैट सेंस इट इज करेक्ट सेही चांस देथो चार्ल्स विल्किंस को विलियम जोन्स को चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड Bhagavad Gita into English na yes factual ha मन रखी बेटा को James William Jones compiled Manusmriti or a notable version of Code of Manu or Manusmriti na yes Charles Wilkins Bhagavad Gita William Jones Manusmriti all the three will be correct factual part again factual tell me what is Mansabdari system and who introduced Mansabdari system? Who introduced Mansabdari system? अकबर कौन पाई की करथिला सर मिलिट्री को सेतिकी स्ट्रेंथन करिया पई हायरार्किकल सिस्टम रे पूरा करथिला अब मिलिट्री सिस्टम को से कौन पे स्ट्रांग करियो तार तो बहुत सारे रीजन अछि माने निजर एम्पायर को स्ट्रांग करबा को अलग अलग आडू धीरे धीरे अटैक स्टार्ट हेता ताको बेसी रु बेसी एरिया ऑक्युपाई करिया थिला the non muslims in the Mansabdari system यस सर why rest of the things हां जंते अपन कहथले जाबे से चाहतला Mansabdari system ता हेरिडेटरी हबो हबनी काई की हबनी तार से बेसी एफिशिएंसी डिक्लाइन करियो हला मनसबदारी हायरार्की बेस्ड रे हबो सेतटे जाट थिबो गोटे गोटे सवार थिबो मन पड़ला तो एवरीथिंग तू ता एइने आगो मन पकेई पढ़िया पड़ियो ना हां शॉर्टकट किछि नै बाजे अथारा ए जो हमें शॉर्टकट दे दू सेमति क्लियर हे जो सेमति किछि हुएनी मनसबदारी पढ़िया पड़ियो आ अकबर आछि मुगल आछि माने मनसबदारी पढ़िचू जदि पढ़िनु ताल तू पाठ पढ़नु जदि पढ़नु ताल जा पढ़िउ जा बुझला एथरे इंटीग्रेट करिवो ना कोन अछि जाट अछि सवार अछि तो हेंस मिलिटरी सिविल ऑफिशियल्स इंटीग्रेट हबो तो मोस्टली जरा 2 टा को न जानते पारु 2 3 टा बोध न जानते पारु किंतु जदि पढ़िथु ताले जानिथु एतिक नॉलेज भी तमे काम कर देगा सर it was hierarchical framework integrating military and civil officials into an imperial service na yes military and civil officials na yes into imperial service na ha 1 जोड़ने तक काटे 1 2 3 1 4 1 2 3 4
the highest ranking officials were called umrah. Eta bhi factual na? Ha, umrah appointments were made by emperor. Emperor ito kariyo au ki kariyo, and initially paid in cash. Akbar time re टका दियो तले cash रे, ता पारे inefficient पिला छुआ तार सब आसीबे, तेणु करी से जागीरदारी सिस्टम को आगु को पड़िबो, लैंड वैंड देकी रेवेन्यू फेवेन्यू देकी जेमिति खराब हुए सेमिति आगु भाबो 1 2 3 ठीक अछि. They followed the hereditary succession pattern. Hereditary ही तो नथिबो, 4 रूट अछि काटे आपे आपे 1 2 3 गला. तू जदी भी उमरा जानिनु किछि खास फरक पड़लानी, तू जानि छु कि हेरिडिटरी सिस्टम नुह. अक्टोबर स्पेसिफिकली मना करथिबो हेरिडिटरी धनेडा हबनी, बुझला. 4 टा कटि गला. मु तमु 100 थर कहूची प्रीलिम्स क्लियर करियार अछि, बेसी बुद्धि लगानी, विड्थ बढ़े की जा, सब थर टिके 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 पढ़ देकी जा, एमिति कटि कुटा जियो. बी इन ए पोजिशन टू से इफ आई डू नॉट नो ताले भारत वर्ष रे केही जानना, दि मु जाननी ताले केही जानना. तापे विड्थ बड़ा, विड्थ डेप्थ छाड़े, डेप्थ दरकार है गोटी जगह रे, एंड इट हैज टू बी ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट. जीएस रे कोठी डेप्थ दरकार नाही, बाजे सारा, दैट इज नॉनसेंस. विड्थ बड़ा, मेंस रे भी डेप्थ दरकार नाही, मेंस रो जीएस रे डेप्थ दरकार नाही. बड़ बड़ क्वेश्चन आसीबो, सब पार्ट सिबो, जोड़े तीनटा पॉइंट से पार्ट सरियो, आ तीनटा पॉइंट परे पे मते डेप्थ दरकार नै, मते एग्जांपल दरकार. एग्जांपल मोर करंट अफेयर आसीबो कोठू ना टेस्ट सीरीज रे, इजी पार्ट. हेरिडिटरी सिस्टम ना ना 4 जोडे से काट दलु कटि गला, 1 2 3 पड़ला. सबोले एमथि हबो, नॉट नेसेसरी. तू 1 टा जानछु, 4 टा जानछु. उमरा एइने तू जानी गलु, उमरा गरा एइ जो टाइप रो पॉइंट गरा तू एमसीक्यू लगी लगी सिखि जु. नॉलेज तो दरकार है, शॉर्टकट फटकट नहीं. With reference to Mughal artistic patronage, overall गप गोटे मु तुमको कहली, तमे मुगल किंग मानकर नेचर जानियार अछि, जोटा कि तमरा क्लास रे हेची. अकबर टाइम रे स्टार्ट हबो, पेंटिंग जीवो पीक को, जहांगीर टाइम रे आर्किटेक्चर जीवो पीक को, शाहजहां टाइम रे, औरंगजेब टाइम रे सब गुड जीवो. उस्ताद मंसूर स्पेशलाइज इन पेंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. फैक्चुअल पार्ट टा किछ करि होबनी, बट इट इज करेक्ट. फैक्चुअल पार्ट पढे पड़ियो कोठू, एनसीईआरटी रो, घटना चक्र, टेस्ट सीरीज रो. जेमति तमे पार्ट टा इने एठू सिखिलो, एमिति टेस्ट सीरीज याडू साडू लगे कि एरा सब तमे कोन करियो ना सिखियो, एमिति एटा ठीक अछि. शाहजहां's primary interest, शाहजहां primary interest lay in art of painting. एटा आर्किटेक्चर कहितले बरंग हे जितांदा, शाहजहां न लेखि कि जहांगीर लिखथिले बरंग हे जितांदा. तो शाहजहां लिखछि 2 टा भूल हबो, 2 काट दे, 1 टा ठीक. फैक्चुअल पार्ट टा आंसर विल बी ओनली 1. या पे कोन करि हबो, किछि करि हबोनी. या पे कि विड्थ बढ़ाया को पड़ियो, पड़ी शॉर्टकट ना, शॉर्टकट फटकट नहीं. In context of, see, एटा तम स्टेट पीस रे आसीबनी. मु स्टिल देन मराठी डिवोशनल लिटरेचर टा को पुरेइली बिकॉज ऑफ ए फ्यू रीजन, जोटा कि इने कहि हबनी. मराठी डिवोशनल लिटरेचर बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन मु ताको पुरेइछि. एटा किंतु यूपीएससी रे आसिया भलो चांसेस अछि, ओडिसा रे आसिया कथा नुह. तेणुक तमे नागरा जानी नथियो, मोस्टली जानी नथियो, जान नथियो, वेल एंड फाइन. तेणुक 4टा का स्टेटमेंट मु एठी ठीक दे दिछि, सो दैट यू कैन रीड एंड स्टडी. बोध हुए पचाई दे पारे महाराष्ट्र रो कोन पई महाराष्ट्र, आई विल टेल इट लेटर. तो 4टा का स्टेटमेंट ठीक अछि हला. फैक्चुअल पार्ट टा किछि नाही कहे पे कि मोस्टली ऑफिस रे आसीबनी एटा. Still then just read it, it's a factual part. तो कराम दिस no, just read it.
एमिते क्वेश्चन पड़ियो मेडिवल मेडिवल आसला इंडियन डिवोशनल पोएट्स माने से मुस्लिम को स्पेसिफिकली पसुनी पसी की पचार दे पारे मोस्टली जदि न पसिबो ताले एमती क्वेश्चन से पचारि तेणुकर आम स्पेसिफिकली व्हाट्सएप दिस इज द worst kind of thing that is the most difficult thing you will face या ऊपर आ किछि नाही से मुस्लिम भीतर न पसे कि हिंदू सिस्टम भीतर रही कि कौन कर परियो ना भाई से ए कर परियो medieval Indian devotional poets consider the following statements कौन थर ना आसीओ तमे ना वाला सुन नथिबो केबे सुनी न बोली मु तुमको एने सुनौछ हला चंडीदास तीनटा स्टेटमेंट ठीक अछि so चंडीदास emphasize that salvation तू कहबे सर मु तो जानिनी चंडीदास किए जदि तू जानिनु हो ता पर स्टेटमेंट वाला सेंस करछु की और सेंस पे की विड्थ ऑफ नॉलेज दरकार चंडीदास मु जानिनी सर चंडीदास के स्टिल देन emphasize that salvation is attainable through divine love भक्ति मूवमेंट रो टाइम रे एई सब काम रा आइथिला इस्लामिक ऑनस्लॉट रु जदि किए प्रकृत रे इंडिया को बंचै छि देन इट इज भक्ति मूवमेंट जे ट्रूली सेव करछि ऑनस्लॉट हला पर बी द ग्राउंड सिस्टम रिमेन इंटैक्ट बिकॉज़ ऑफ द भक्ति मूवमेंट ए स्टेटमेंट स्टेटमेंट को सैटिस्फाई करूची rooted in early passion for an earthly passion for an individual क्वेश्चन दा सेंस करूची जदी पूरा ब्लैंक अछि यदि किछि जानि पारुनी ताले हमें एमती सॉल्व करू यूपीएससी एग्जाम हॉल भितरे प्रोबेबली मोस्टली आंसर दा हबो विद्यापति अगेन आई डू नॉट नो कंपोज्ड बेंगली सॉन्ग्स धर ठीक अछि ऑन राधा कृष्ण तापर कोन भाबिबू अच्छा जदी ए स्टेटमेंट का ठीक अछि ताले एटा जे ताको सैटिस्फाई करथो ताले आंसर हे जे पारे कंट्रीब्यूटिंग टू बेंगली वैष्णविज्म एठी बेंगली लिखिची एटा ठीक हे जे पारे मु कहूनी एमती ठीक हबो बोली एटा को मार्क करियार नाही एठी तमरा स्क्वायर पकी जिबारी बुझला लास्ट 10 मिनिट रे मु आपरे रिस्क नहीं पारे जदी पूरा ब्लैंक हे जेछि त बुझियो छि कोन कहूची मु आज्ञा सर पूरा ब्लैंक हे जेछि ताहाले ए सब काम करियो हमें किछ जानि ही पारुनी कि किंतु मु छाडुनी मु सेते लागुची केमती मु ताकू जाननी याकू जानि ओके तापर देखुची स्टेटमेंट सेंस करछु की मेडिवल कथा कहूची माने भक्ति मूवमेंट हे जे पारे ओहो भक्ति मूवमेंट रो पाठ तक मु मी माय गॉड फुल स्टॉप मझरे कई ने डिवाइन लव कृष्ण नेम राधा नेम इन द नेम ऑफ गॉड तले एटा सेंस कला ना तले छाटा हे जे पारे तापर एठी बेंगल लेक्ची आ भक्ति मूवमेंट टाइम रो माने भाबु चेमतिया कंट्रीब्यूटिंग टू बेंगली वैष्णविज्म आमे जानि छु चैतन्य महाप्रभु येसी एमति मु भाबु छि ना एटा हे जे पारे केते दूर ठीक भाबु छि भूल भाबु छि छाडे विश्वम्बर मिश्र ए मेंबर ऑफ शंकराइट दशनामी सेक्ट कोन था मल्ला मनुष्य लेफ्ट बिहाइंड न्यूमरस थियोलॉजिकल राइटिंग जदि एटा जाय ठीक अछि ताले एटा भी ठीक हे जाय परियो माने पूरा सेंस माने सेंटेंस टा मोर सेंस करूची माने ठीक हे जाय परियो 1 2 3 मोर अछि मु तो मार्क कलिनी मोर घर पकेली धर यार पेज नंबर होची 14 क्वेश्चन रो पछकु गली पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 49 और 47 मारली तापर छाडली क्वेश्चन नंबर 42 गली मो लास्ट 5 मिनिट 10 मिनिट पई याकू छाडली धर मोर मु धर भाबिची 85 टा अटेंड करबी अभी हेई पारुनी 80 रे अटकिला 70 रे अटकिला ता भले मु या पर रिस्क लेबी getting यस सर एमान सब ना लिखाई छी किछि जिंस लिखाई छी गवर्नमेंट जदी भी याकू ओवरराइड करिवो ताले आखरे पाखरे कोडोड आसी की पड़ियो आइले हमर चैतन्य महाप्रभु
जो केही कर परिबेनी तमे करिक आसियो सर मोर रजिया गोटे डाउट अछि जेतिके भी वैष्णवाइट्स अछंती से माने स्टार्टिंग रो शेवाइट्स थांती तापरे ही ना ना सेमती मैक्सिमम केस रे कहि हबो अरे समस्त सेवेट सेमती भी जदि देखिबु विदाउट शिवा no philosophy is a possibility. The essence of philosophy is Shiva. In that sense, it can be said, but your statement cannot be always correct. Cannot be always correct. बुझेला अरे बुझेला आज्ञा सर रजिया सुल्ताना we came to the only Muslim ruler, women ruler, huh? Rajia Sultana. Consider the following statement. Rajia Sultana ra eta pachachhe incorrect. एठी पर आसीबो आगे एठी आसीबो इनकरेक्ट माने ठीक माने भूल भूल माने ठीक हमें अगर देखिया स्टेटमेंट तक ठीक अछि ना भूल अछि ओके इल्तुतमिश वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी नाटा तमे सुनी थिबो धर सुनी न वर्स्ट केस है धर सुनो देन व्हाट सपोर्टेड Razia's accession to the throne. Razia was a woman. Do you really feel women को support करिवे दिन those orthodox times आज ही support नहीं modern educated India had reached Mars moon कौन this that and all आज ही support नहीं that to slave country that to समाने आश्चर्य बाहरु that to Central Asians that to women rule that is not a humanly possible thing supported हबनी ताले वन टा भूल हे गला ताले वन टा ठीक हे जदी पढ़ी के जाइछु तो भलो कथा जदी न पढ़ी के भी जाइछु रजिया सुल्ताना रो सपोर्ट नथिबो ताकू जणे सपोर्ट करतो जियो को सब बेले जणे सपोर्ट करे ता ना होची बापो बुझला ता छडा तारा देयर इज नो सेकंड सपोर्ट सिस्टम Razia launched an expedition against Ranthambore to subdue the Rajputs. Not practically possible to do. She launched करची हमें मानी लू से internal disturbances को suppress करची. Razia Sultana itself is a very big thing. The statement 2 टा भी भूले गला तला आंसर एटा हबो. Yaqut Khan's appointment as superintendent of royal sable घोड़ा मानकर signified his proximity to the ruler माने राजा सुल्ताना ना हाँ यारी संगे तार अफेयर थियो एथि पे कि ए लोकटा मरिबो मध्य तने को स्टेटमेंट ता ठीक अछि तले 3 टा हबनी 3 जोट अछि काटा 1 4 1 2 4 रजिया consistently appeared in public ठीक अछि on horseback घोड़ा रे बसी आसे exaggerated हे गला से नॉर्मली आसे बुरका पिंधेनी पब्लिक रे से बुरका पिंधेनी बोली ऑर्थोडॉक्स मेन मानकर रिएक्शन भी हे जाय how a woman can show her face it is more how a woman can show her hair चुटी के में देखि बल्ला now what is the माने माने significance of hair is what hair shows sexuality now how about chhado say to even if you can show your face you cannot show your hairs चुटी देखि परिबनी hence से तो चुटी देखे कि फेस देखि कि आस्तला ता पर रिएक्शन होतला से पब्लिकली आसे से कोर्ट को आसे से हॉर्स बैक रे बसी के आसे दिस इज एक्सैजरेशन बुझला तने करे एटा जावनी तने करे स्टेटमेंट ता भूल गेला तने पड़ला था 1 to 4 ही रहला 1 to 4 रहला आंसर राजा सुल्ताना पढ़ी कि जीवु किछि बाट नाही पढ़ी थिले एतक पाला करिया को हमर एठी पढ़ीवनी जतिक मने तुमको बुझेइली डायरेक्ट हे जीवो न पढ़ी थिले एया करिवो बुझौची किछि किछि जिंस किंतु तते जाने को पड़िबो तुर्काने चहलगानी या विरुद्ध रे जीव
तुर्कान ने चहलगानी को बनै थो द 40 नोबल्स को बनै थो इल्तुतमिश तारी बापो बुझला एको केही सपोर्ट करन थे ता भाई भी करन थो ओवरऑल किछि जिंस तुमको इंटरनल जिंस को से सप्रेस करिछि भील रे रुहेनी फेस देखैबो आसिकी काम करिवो गोटे लव ट्रायंगल अफेयर गोटे थिबो ता जो से हारिबो भी लास्ट को मरियो दिस दैट एंड ऑल से ओवरऑल स्टोरी तुमको जाने को पड़ियो ता परे जदी न ही पल्ला द थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग यू विल गेट यूटिलाइज्ड ओवर हियर गेटिंग Yes, sir. बालबन्स एडमिनिस्ट्रेशन से तुर्कान ने चहलगानी भितर ये गोटे थिबो ये तले आसीओ पावर को शिकवारे हे एई माने ही थिले ना तणु करी ये प्रथम काम करिवो तुर्कान और द 40 नोबल्स मान को अटैक करिवो तांको ट्रैप करिवो जाल रे फसेवो से मान को मारिवो और एंड 40 को तुर्कान चहलगानी को ताको डिसबैंड कर दो किमा केमति करिवो ना ग्रेजुअली दोस स्टोरीज आर देयर से निजो को पावरफुल देखेबो ऑल दोस थिंग्स सेंट्रलाइज्ड पावर रहिबो मंगोल्स सबु बड़े दिल्ली सल्तनत आगरे two forces are massive trouble one is rajputs and other is mongols semane continuously लडुथिबे तले मुगल्स आसीबो सेतले मंगोल्स मानकर कैपेबिलिटी कमिची राजपूत मानको मिसै देछि अकबर अगर आउर ट्रबल होछि अफगान्स से राजपूत को लगे कि अफगान्स को हरेइबो आई रिपीट दिल्ली सल्तनत अगरे मेजर ट्रबल होछि राजपूत एंड मंगोल्स मुगल जतरा आछि मंगोल कर डिक्लाइन हेछि मुगल अगरे जोड़े ट्रबल होछि अफगान्स एंड राजपूत अफगान्स मान को अकबर हरेइबो राजपूत को लगे हेंस राजपूत सबु बेले तार मिलिटरी जनरल पोजीशन रे रहिबे including at the time of Aurangzeb also बालबन अगर ताले जोड़े ट्रबल ताले अछि से तो गोटे ट्रबल होछि मंगोल विरुद्ध ये लढिछि ना हां आर्मी स्ट्रांग बनेछि ना हां सेंट्रलाइज्ड पावर से करछि ना हां मु तुम कहितली ग्रांड कोर्ट बनेइबो बेसिक स्टोरी ग्रांड कोर्ट बनेइबो किंग अगर कहीं हसी परिबेनी किंग को सजदा करिवे किंग अगर मुंड नुआइबे टेबल्स करिवे किसिंग द फीट बड़ कोट गोटे हेथिबो एंड हाफ नेकेड मेन हेथिबो बड़ बड़ लोकर सब ठिया हेथिबे विथ नेकेड यू नो सोर्ड्स एंड बलबन निजे बड़ दाढ़ी रखुथिबो यार सब सिग्निफिकेंस अछि बड़ दाढ़ी रखुथिबो बड़ मुह हेथिबो तार बिग स्ट्रक्चर से बहुत फ्यूरियस देखा जाउथिबो गोटे हार्डकोर स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन बनेबो सेंट्रलाइज्ड जी ता विरुद्ध जीव से ताको मार दउथिबो एटा होची बेसिक ओवरऑल स्टोरी आर्मी पेंग लागिथिबो ता बाद रे तम नॉलेज अछि बालबन सेंट्रलाइज्ड पावर ठीक अछि एक्सक्लूडिंग इवन फैमिली मेंबर्स फ्रॉम अथॉरिटी हां बालबन पाखे सब थियो खाली से ही रहथो एक्सक्लूडिंग इवन फैमिली मेंबर्स फ्रॉम अथॉरिटी यस मेक सेंस चारटा कर बांध दी ना ओके he dismantled the influence of Chahalgani nobles कारण से निजे से गोटे थिबो एई मानको बालबन विथर तार पार्टी चेंज करछि विल सी दैट लेटर से डिसमेंटल करछि ये चहलगानी को ना हां टूटा भी हबो he established a robust centralized army okay it is ठीक अछि to address internal unrest and Mongol threats internal unrest Rajputs and others को कहछि मंगल सेटा होथिबो ना हां दिल्ली सल्तनत रे पूरा कर थ्रेट होछि मंगल्स एंड राजपूत अदर्स भी अछंती बेसिकली ए दि जन तो रहिबे he restructured the military department दीवाने अर्ज मिलिटरी डिपार्टमेंट को कोनती दीवाने अर्ज रिसर्च अछि ना हां आंसर विल बी 1 2 3 4 जो माने पढ़ी के आसे न तुमको टिके असुविधा होथो
50. What is codiatom? What is codiatom? What is atom? Mohini atom. What is atom? What is Mohini atom? सर से केरला जो मोहिनी Arpit. सर केरला डांस What is the story behind it? सर विष्णुଙ୍କର जो अवतार ହେଇଥିଲା ମୋହିନୀ अवतार ସେଇଟା नहीं विष्णुଙ୍କର अवतार कौन ପାଇଁ की ହେଇଥିଲା? सर जो अमृत ପାଇଁ कोडियाटम ऊपर atom means dance or theatrical performance भी कही हबो हला कोडियाटम एथि ପାଇଁ की थिला न्यूज थिला कौन यूनेस्को रिकॉग्निशन तारा हेछि तो यूनेस्को रिकॉग्निशन हेछि चुपचाप ताको तमे पढ़ी के जीवो. It is a traditional performance of classical Sanskrit drama. Only left. एकमात्र लिखा है one of the oldest survival theatrical tradition in India performed in Sanskrit. Almost our quotes nahi Sanskrit. India's only surviving form of classical Sanskrit theatre. Very UNESCO recognized of intangible heritage. So it's a very probable question. Aharya refers to specialized theatre space for Kodiyatam performance. Kodiyatam dance from the culture. देखिए. I hope you can see it from here if it is clear for you. आप देखाओ जेड़ा. आज्ञा सर. Okay. Aharya refers to specialized theatre space for Kodiyatam performance. Nano. Gramadeepikas and Atta Prakaras are the text detailing stagecraft aspects. Pura factual sir. 1 and 3 hour. Puta dekh. There is something called as Kuthambalam. The specialized performance space of Kodiyatam is called as Kuthambalam, not Aharya. बुझला एटा होची नाट्य शास्त्र अछि which refers costume, makeup, ornaments and other physical aspects of performance. Actual part, just go through it. Easy. Pachasa salla. Next class we will deal with rest of the things. Any doubt till now? Till 50? See, I have seen many places where teacher says कि एया शॉर्टकट कर दू सेया शॉर्टकट कर दू किछि नाही भाई सेमतिया कोचिंग चले ड्रामा एगरा सब सेमति किछि नाही मु तो मु जहा कहली तापे गोटे बेसिक नॉलेज दरकार पड़छ हमु. We need a sense of basic knowledge for everything. Enhance your width, then things will happen. Width बड़ा NCERT पढ़े घटना चक्र लगा और जो टाइप रो कथा मु जेंति कहू सेमि देखियो सेमि करियो ताको इंप्लीमेंट करे नले वीडियो को दिथर देखे तापर टेस्ट पेपर उठे पढ़े टाइम में बही खोले देखे सीखी आंसर ठीक करे एलिमिनेशन करिया देखे सब क्वेश्चन में बुद्धि लगा एटा हले सेटा हो एटा जो जानितला सेटा हो अच्छा पूरा सेंटेंस ता ताले स्टेटमेंट ता सेंस करूची ना ताले एटा हेई पारे
तोर इंट्यूशन बेसिस से तापर तू करियो ताले एई टाइप रो आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिया पई पड़ियो बुझला यू हैव टू एथरे यूपीएससी प्री बाहर जिवो ओपीएससी इज ए किड छुआटे सेटा गेटिंग गो